Sisters and brothers of America, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religion. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you men far-off nations may well in the honor of theirs the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. From the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the low ideas of idolatry with its multifarious mythology, the agnosticism of the Buddhists and the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religion. Where then, the question arises, where is the common center to which all these widely diverging radii converge? Where is the common basis upon which all these seemings rest? And this is the question I shall attempt to answer. The Hindus have received their religion through revelation, the Vedas. They hold that the Vedas are without. It may sound ludicrous to this audience how a book can be without beginning or end. But by the Vedas, no books are made. They mean the accumulated treasury laws decided by different persons, just as relations between soul and soul and between individual spirits and the Father of all spirits were there before their discovery and would remain even if we forgot them. The discoverers of these laws are called rishis, and we honor them as perfected beings. I'm glad to tell this audience that some of the very greatest of them women. Here it may be said, maybe without end. But begin creation without beginning or end. When nothing existed, where was all this manifested energy? Some say it was in a potential form in God. In that case, God is sometimes potential and sometimes kinetic, which would make him mutable. Everything mutable is a compound, and everything compound must undergo that change which was a time when there was no creation. If I may be allowed to use a simile, creation and creator are two lines without beginning and without end, running parallel to each other. Every day, the sun and the moon, the Lord created like the suns and moons of previous cycles. And this agrees with modern science. Here I stand, and if I shut my eyes and try to conceive my existence, I,
What is the idea before me? The idea of a body. Am I then nothing but a combination of material substances? The Vedas declare, no. I am a spirit living in a body. I am not the body. The body will die, but I shall not die. Here am I in this body. It will fall, but I shall go on living. I had also a past. The soul was not created, for creation means a combination, which means a future dissolution. The soul was created, it must die. Born others again are idiots and only on a wretched existence. Why create one happy and another unhappy? One matters in the least to hold that those who are miserable in this life will be happy in a future one. Why should a man be miserable even here in the reign of a just and merciful God? In the second place, the idea of a creator God does not explain the anomaly, but simply expresses the cruel fiat of an all-powerful being. There must have been causes then, before his birth, to make a man miserable, and those were his past actions. Are not all the tendencies of the mind and the body accounted for of the mind, the other of matter? If matter and its transformation answer for all that we have, spiritual monism is certainly logical and no less desirable than a materialistic monism. But neither of these is necessary here. We cannot deny that bodies acquire certain tendencies from heredity. But those tendencies only mean the physical configuration through which appear away. In the natural habits of a newborn soul, and since they were not obtained in this present life, they must have come down from past time. Taking all the intent are now present in my consciousness, but cannot melt in the air cannot dry. The Hindu believes that every center is located in the body. Nor is the soul bound by the conditions of matter. In its very essence,
It is free, unboundedly, but rather it's cut down to as matter. No free question, and say that no such question can be there. Some thinkers want to answer it by positing one or more quasi-perfect beings and use big scientific names to fill up the gap. But naming do not know how the perfect being, the soul, came to think of itself as imperfect, as joined to and conditioned by matter. But the fact is a fact for all that. It is a fact in everybody's consciousness that one thinks of oneself as the body. The Hindu does not attempt to explain why one thinks one is the body. Will of God is no explanation. This is nothing more than what the Hindu says. I determined by our past actions, and that the present will go on evolving up or reverting back from birth to birth and death to death. But here is another question. Is man a tiny boat in a tempest, raised one moment on the foamy crest of a billow, and dash on into a yawning chasm, rolling to and fro at the mercy of good and ever-rushing, uncompromising current of cause and effect, a little knot placed under the wheel of causation, which rolls on, crushing everything in its way, and waits not for the wish of the thinks of the idea. This is the law. Is there no hope? Is there no escape? And words of hope and consolation came down and inspired a Vedic sage, and he stood up before the world and in trumpet voice proclaimed the glad tidings. Hear ye, children of immortal bliss, even ye that reside in higher spheres. I have found the Ancient One who is beyond all darkness, all delusion. Knowing him alone, you shall be saved from death over again. Children of immortal bliss. What a sweet, what a hopeful name. Allow me to call you, brethren, by that sweet name, heirs of immortal bliss. Yea, the Hindu refuses to call you sinners. We are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth, sinners, it is a sin to call a man so. It is standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. You are souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is your servant, not you, the servant of matter's proclaimed, not a dreadful combination of unforgiving laws, not an endless prison of cause and effect, but that at the head of all these laws, in and part, by whose command the wind blows, the fire burns, the clouds rain, and death stalks upon the earth. And what is his nature? He is everywhere, the pure and formless one, the almighty and the all-merciful. Thou art our Father, thou art our Mother, thou art our beloved friend, thou art the source of all strength. Give us strength. Thou art he that beareth the burdens of the universe. Help me bear the little burden of this life. Thus sang the rishis of the Vedas. And how to worship him? Through love. He is to be worshipped as the one beloved, dearer than everything in this and the next life. This is the doctrine of love declared in the Vedas. And let us see how it is fully developed and taught by Krishna, whom the Hindus believe to have been God incarnate on earth. He taught that a man ought to live moistened by water. So a man ought to live in the world
his heart to God and his hands to work. It is good to love God for hope of reward in this or the next world. It is better Ravana was driven from his kingdom by his enemies, shelter with his queen in a forest in the Himalayas. And there, one day, the queen asked him how it was that he, the most virtuous of men, should suffer so much misery. Yudhishthira answered, "Behold, my beautiful, I love them. They do not, my nature is to love the grand, the beautiful. Therefore, and furies. If there are existences beyond the ordinary, sensuous existence, he wants to come face to face with them. If there is a soul in him which is not matter, if there is an all-merciful universal soul, he will go to him direct. He must see him, and that alone can destroy all doubts. So, the best proof a Hindu sage gives about the soul, about God, is, I have seen the soul, I have seen God. And that is the only condition of perfection. The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realizing, not in believing, but in being and becoming. Thus, the whole object of their system is by constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God. And this reaching God, seeing God, becoming perfect, even as the Father in heaven is perfect, constitutes the religion of the Hindus. And what becomes of a man when he attains perfection? He lives a life of bliss infinite. He enjoys infinite and perfect bliss, having obtained the only thing in which man ought to have pleasure, namely God, and enjoys the bliss with God. So far, all the Hindus are agreed. This is the common religion of all the sects of India. But then, perfection is absolute, and the absolute cannot be two or three. It cannot have any qualities. It cannot be an individual. And so, when a soul becomes perfect and absolute, it must become one with Brahma, and it would only realize the Lord as the perfection, the reality of its own nature and existence, the existence absolute, knowledge absolute wound. It is nothing. It must be greater happiness to enjoy the consciousness of two bodies, the measure of happiness increasing with the consciousness of an increasing number of bodies, the aim, the ultimate of happiness being reached when it would become a universal consciousness. Therefore, to gain this infinite universal individuality, this miserable little prison individuality must go. Then alone can death cease when I am one with life. Then alone can misery cease when I am one with happiness itself. Then alone can all error cease when I am one with knowledge itself. And this is the necessary to me that my body is one little continuously changing body in an unbroken ocean of matter, and Advaita, or unity, is the necessary conclusion with my other counterpart, soul. Science is nothing but the finding of unity. As soon as science would reach perfect unity, it would stop from further progress, because it would reach the goal. Thus, chemistry could not progress farther when it would discover out of which all others could be made. Physics would stop when it would be able to fulfill its services in discovering one energy of which all the others are but manifestations. And the science of religion become perfect when it would discover him who is the one life in a universe of death, him who is the constant basis of an ever-changing world, one
who is the only soul of which all souls are but delusive manifestations. Thus is it, through multiplicity and duality, that the ultimate unity is reached. Religion can go no farther. This is the goal of all science. All science is bound to come to this conclusion in the long run. Manifestation and not creation is the word of science today. And the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language and with further light from the latest conclusions of science. Descend we now from the aspirations of philosophy to the religion of the ignorant. The tree is known by its fruits. When I have seen amongst them that are called idolaters, men, the like of whom in morality and spirituality and love, I have never seen anywhere, I stop and ask myself, can sin beget holiness? Superstition is a great enemy of man, but bigotry is worse. Why does a Christian turn toward the sky in prayer? Why are there so many images in the Catholic Church? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about anything without a mental image than we can live without breathing. By the law of association, the material image calls up the mental idea and by after all, full world. It stands merely as a word, a symbol. Has God superficial area? If not, when we repeat that word omnipresent, call that a sin? Nor, even when he has passed that stage, should he call it an error. To the Hindu, man is not traveling from error to truth, but from truth to truth, from lower to higher truth. To him, all the religions, from the lowest fetishism to the highest absolutism, mean only is a young eagle soaring high, gathering more and more strength till it reaches the glorious sun. Every other religion lays down certain fixed dogmas and tries to force society to adopt them. It places before society only one all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the absolute can only be realized or thought of relative, and the images, crosses and crescents are simply so many symbols, so many pegs to hang spiritual ideas on. It is not that this help is necessary for everyone, but those that do not need it have no right to say that it
सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं हमारे अतिथियों के सम्मान का आदर था। मैं माननीय शिक्षक महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री की आदेश मैं आपके कि हमारे मध्य में आए हमारे शिक्षा ऐसे हमारे निदेशक महोदय करें। आज का विषय है कि याद करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे निदेशक महोदय को हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आशीष पटेल जी, प्रावधिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रमुख अतिथि श्री अमदेवराज जी, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर देवी पांडे जी, अन्य मंचासीन सदस्य हमारे डिपार्टमेंट, मीडिया के लोग, शिक्षकगण और हमारे छात्र जो वर्ष में डिग्री प्राप्त किए हैं और जो वर्तमान में छात्र छात्रा हैं सभी किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए उसके छात्र एक बहुत इम्पोर्टेंट जरूर होते हैं और हमें IIT लखनऊ को इस बात हमारी पास आउट हो चुके हैं। हम लोगों को अपने एलुमनी पे गर्व है और हमारे हमें साथ ही हमें उन शिक्षकों पे जो कि उन छात्र छात्राओं का वर्तमान में और मैं बताना चाहूँगी जो हमारे पास
प्रजाओं में सबसे ज्यादा विषय ये है कि करीब हमारे 17 छात्रों को और 50 लाख के ऊपर का मिला। आपने अपने संस्थान में करी है और हमें ये बताते हैं सर, और उसमें से 6 स्टार्टअप जो है हमारे छात्रों के द्वारा संचालित। हम लोगों को 7 स्टार्टअप के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है, अनुमोदन मिला है, अनुदान मिल भी चुका है। इसी क्रम में हम लोगों ने अपने एलुमनी को, जो कि विभिन्न एरिया में एक्सेल कर रहे हैं, न केवल कॉर्पोरेट जगत साइंटिस्ट के रूप में, रिसर्च के रूप में, हम लोगों ने हमारे एलुमनी को सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे 17 एलुमनी ऐसे हैं जो कि इसरो से जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत तौर से आज ऑनलाइन के माध्यम से करीब 12 ऑनलाइन हमारे एलुमनी उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग आज आपके माध्यम से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल का भी उद्घाटन करवा रहे हैं और इसमें हमारा जो नवाचार इनोवेट फाउंडेशन है, उसमें हम विमेन के लिए जो हमारी छात्राएं हैं और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके साथ जुड़ करके एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, जिसमें महिला उद्यमियों के हम कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में हम लोग सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के लिए है, उसमें हम छात्रों को, अपनी छात्राओं को जो पास आउट हुए हैं उनको आज टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और हम लोगों का आज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक एमओयू भी हम साइन कर रहे हैं सर, वो भी आपके माध्यम होगा। हमको आपसे आशीर्वाद मिलेंगे। इस आशा के साथ हम आपका यहाँ आने के लिए, समय लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे प्रमुख सचिव एम देवराज जी का और कुलपति जी का, जो कि इस संस्थान में 6 माह के बाद प्रथम बार आ रहे हैं, सभी का हम लोग कृतज्ञता से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक महोदय। 40 साल का इतिहास और 36 ब्रांड, इसी कार्यक्रम के रूपरेखा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है भविष्य की नींव रखते हुए एमओयू को साइन करना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भारत सरकार के साथ आज भारत करने जा रहा है, संस्थान करने जा रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इंचार्ज इंक्यूबेशन सेंटर प्रोफेसर सीता लक्ष्मी जी को एमओयू से बताते हुए, इससे अवगत कराते हुए आगे की सेरेमनी को कोऑर्डिनेट करें। प्रोफेसर सीता लक्ष्मी। Thank you, Dr. Pragati, respected audience. So I'm highly privileged for having given me an opportunity to speak on this MOU. Now, this MOU is getting signed between STPI, Software Technology Parks of India, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, and the Institute of Engineering and Technology. Now, this MOU aims to facilitate the incubation and give an enhancement, acceleration to technology incubator. Now, STPI has already established 5 incubation centers in the state of Uttar Pradesh, and one among them is a Center of Excellence in coordination with SGPCI and STPI, and offers for enhancing umbrella under the umbrella of Association of India Manufacturers of Medical Devices Industry. So this particular MOU, it would be facilitating, it would be enhancing the skills of the technological entrepreneur for giving an enhancement and also in getting in research and in prototype development. This also aims to develop the employment opportunities. The role of IET over here is to extend the technical help for the mentorship of the startup
And the other way, since IET is the base of interaction with the students, we would be facilitating the students can take part in startup and also allow the STPI through its innovation centers to develop the startup ideas in the students. Now, with this vision, we are entering an MOU with STPI, and I would like to welcome Dr. Praveen Kumar Dwivedi, Additional Director STPI, and also Dr. Pradeep Bajpayee, Registrar IET, for a kindly coordinate. सराहनीय प्रयास IISc सेल और IIT लखनऊ का आशा करते हैं कि STPI के साथ ये एमटेक छात्रों के लिए नए अवसर और नए आयाम खुलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि कर्तव्य ध्वनि से इस MOU का अभिवादन करते रहें। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी जी STPI and Dr. Pradeep Bajpayee ji, Director Registrar IIT Lucknow, and IIT Cell, Faculty in Charge, IIT Cell and Incubation Center, Professor Seetalakshmi ji and Dr. Pushkar Tripathi ji। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में भारत देश की विभिन्न उपलब्धियों में entrepreneurs, bureaucrats, ministry, administration, multinational companies, Microsoft, Google, Facebook इत्यादि क्षेत्र में संस्थान के पूरक छात्रों द्वारा अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया गया है। तो मैं आश्चर्य के साथ कहना है कि संस्थान के साथ इसरो ने भी विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह गर्व की बात है कि हमारे संस्थान ने भारत देश को कितनी संख्या में वैज्ञानिक भी दिए हैं। आज हम इसरो में कार्यरत पूरक छात्रों को संस्थान स्तर से माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री और माननीय प्रमुख सचिव के समक्ष सम्मानित करने जा रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संस्थान के डीन एलुमनाई प्रोफेसर DS यादव जी को कि वो सम्मान किए जाने वाले छात्रों और उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें संक्षिप्त रूप से अवगत कराएं तथा माननीय मंत्री जी और माननीय प्रमुख से प्राथमिक शिक्षा जी के समक्ष उनको सम्मानित करें। प्रोफेसर DS यादव। Thank you, madam. Honorable Minister of Technical Education, Shri Ashish Patel ji, Principal Technology, Technical Education, Shri M. Devraj ji, Honorable Vice Chancellor, Technical University, Director IIT Lucknow. Very rightly mentioned, IIT was established 40 years back and almost 36 batch has already passed out. And when it comes to the alumni, let me tell you, almost 10,000 alumni we have, and they are spread across the globe, both in India and abroad. We at IIT, we are very happy to share you most of the IIT alumni. They are doing very well in the field, working in various sectors. IIT is actually committed towards nurturing positive attitude, technical and capabilities among the students with the intention of welfare and enhancing the society. Just to mention, we have taken an initiative with IETLLA, IIT Lucknow Alumni Association, and we are actively connecting with the alumni which are working here in India or the Europe and United States. Very recently, one of the alumni meets at each state at the California and the San Francisco, where more than 20 employees or 20 alumni working very seriously with those parts of almost around the 90s. They gathered and with this initiative,
lots of activities, lots of chapters that are being offered up. And very recently we had alumni together. And London we had Singapore plan. Very recently we had Bangalore. So overall objective is to actually synergize the knowledge and the technological skills what they have, we can share with these students. With this note, I can share lots of alumni. They are working at the Microsoft at the level of the director or maybe CEO, vice president of Bank of New York. We met vice president of Fox Corporation, like this. So this is with this, I would like to introduce, and we have seen that lots of news about the ISRO and at the ISRO, our students and the alumni, those who have been working as long as 90, 30 or 30 years and holding very senior positions because of their immense research and the leadership capability. This is IIT Lucknow Field Pride, all the students, everyone who is the stakeholder of IIT, that so many things, including the Chandrayaan and the Gaganyaan. So we have identified the 17 ISRO scientists who have contributed directly and indirectly to the endeavor which makes the nation and our stuff. So with this, we just read out the alumni who are present here and they are connected with the online. Mr. Rishabh Garg, and he is currently scientist at the SSC, and he has been actively involved in the non-vehicle cruise control component design field. This was for the Gaganyaan and the Chandrayaan. One of the very senior employees, Mr. Asif Siddiqui, he graduated in 1990, has been serving for 30 years, and currently he is the general manager at Lucknow, and he has been providing the logistic input and provided lots of guidance as far as the tracking is concerned, including the project of Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. Another is Mr. Abhilash Kumar. He is computer science engineering student, passed out in 2002, and he was involved in the team of liquid propellant system and directly linked with the Chandrayaan mission. Next comes the Shantanu Srivastava, who is 2016 graduate electronics and communication engineering, and he has been assigned the task to a member of a team establishing real-time connectivity with the steel aircraft. So he is working with the flow from here. Next in the line is Ramesh Kumar Agarwal, and he is scientist at this level, and he is currently the satellite operation manager and district operation director at Bangalore. He has been contributing to many universities. Next is Mr. Saurabh Tanwar, and he is 1998 or so, electronics and communication engineering, and he is working in the area of remote sensing application for systematic approach using better polymetry and spectrometry. We have also worked with the Advanced Data Processing Research Institute at Hyderabad, and he has been conferred ISRO Team Excellence Award for design and development of encryption techniques for secure transmission. Next is writing Madam Poonam Chatty. He is very senior, part of in 1990 and working with the ISRO for more than 30 years. And she has been instrumental in developing highly integrated lightweight RF system and the component system. And she has been awarded ISRO ESI Best Woman Scientist Award by the ISRO in 2011. And the ISRO Team Excellence Award for Christian by the ISRO.
National line is a design team, and he is a civil engineer, and he is currently in charge of the operation, construction, maintenance as is at Ahmedabad. National line is a Vikas Singh, who is computer science and engineering graduate, passed out in 2012, and he has been very actively involved in the Chandrayaan 2 orbiter and lander and Chandrayaan 3 lander system. He is also associated with NASA ISRO Indigenous Development College Order. So this is a program which is going on. Next is Mr. Hitesh Kumar, who is and working at ISRO Bhopal. And next, the guy is Mr. Abdul Sahib Ayub. He is computer science engineering 2012 graduate, and he is working at the scientist at D level at the Space Application Center at Ahmedabad. And he has actively contributed to both Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. One of the very important alumni is Madam Leena Kohli Kapoor. She is graduate of 1992, Electronics and Communication Engineering, and she is project manager and actually is a project director for CSAT 6 and CSAT 19 ground communication system, what we are doing today. Leena Kapoor has also been awarded ISRO Team Award for CSAT 6 ground system development and ISRO application of applications for technology transfer of and transfer. Next guy is Mr. Avnish Pandey. He is mechanical engineering graduate who was in 16 batch, and he has delivered the system for 10 vehicle projects in the Chandrayaan 3 project. And currently he is also executing the work in the Chandrayaan mission. Next line is Mr. Vishal Agarwal, and current position is heading in the network division of the ISRO. And he worked with the AutoCAD and the Navigate project of ISRO. One of the important elements British Sharma is reference and communication. One and he at this moment head of the micro base, and he has been involved with it, and he has one project he was involved in multi-millimeter wave from the solar project Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. He has also designed his work on the Indo-French project and currently working on it, and where he is looking after mega mission and involved in the digital subsystem, design and development of the digital subsystem for carbon data and data for the Chandrayaan. He also presented the 50 project director of Chandrayaan 3 and has successfully delivered onboard digital processing units which are involved in the successful landing of Chandrayaan 3. Finally, we have Ajay Mahajan, he is electronics engineering 2004 graduate, and currently he is posted at ISRO headquarters and working with the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar project, a NISCAR project, and the radar RISAT research project. And lastly, the last Madam Shweta Tanaji, she passed out in 2007, working at the SAC Ahmedabad, and currently is holding the position of scientist there and involved in the platform and navigation development area of the state of Ahmedabad. So I think most of the alumni or they have contributed immensely. There is absolutely no doubt about it. And I take for them because of the paucity of the time, their contribution, each
are very thankful. We feel proud of your contribution to ISRO, and as a citizen of this country, we really very proud. We very proud of every Indian to getting out. So, I would like to thank her, and she has been doing immense work, has been doing outstanding work as far as the connectivity of the airline. Madam, we are interested to come on the journey come on to this. संस्थान के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट की बड़ी उपलब्धियों का संक्षिप्त सभी को आनंदित करता है, स्पेशली तो से इसका अभिवादन करें और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर जी यादव सर की उन्होंने स्पेस रिसर्च सेंटर में आईटी संस्थान के एलुमनाई वैज्ञानिक में काम कर रहे थे उनसे हमें अवगत कराया। थैंक यू सर। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अब समय आ गया है वुमेन उद्यमशीलता सेल के उद्घाटन का। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल संस्थान की इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के अंतर्गत कार्यरत सेल है जिसके कोऑर्डिनेटर्स हैं डॉक्टर और आज मंत्री जी श्री आरती की तरफ से बोला जा रहा है तो मैं आमंत्रित करूंगी प्रगति जी। महिला उद्यमशीलता सेल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल हमारे संस्थान में आज से इसका उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन करने जा रहे हैं कई बच्चों ने कहा आपको कैसे हुई ये जो सेल है ये हमारी बच्चियों के लिए है लेकिन केवल हमारे संस्थान में कार्यरत दल के लिए नहीं है पढ़ने वाली बच्चियों के लिए बल्कि हमारे संस्थान में कोई कर्मचारी महिला है इवन हमारे नियर बाय एरियाज में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी महिला है जिसको लगता है कि कल हम भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जिसको लगता है कि हम भी कोई उद्यम चला सकते हैं तो ये सेल कोशिश करेगी कि हमारा संस्थान एक ऐसा स्पेस डेवलप करे जहाँ पे कोई भी आकर महिला बच्ची स्टूडेंट तुरंत कह सके कि मैम हमें पता चला कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनाए जाते हैं और महिला एंटरप्रेन्योर बनाए जाते हैं तो इसी रीजन के साथ ये आज बनने के बारे में नहीं बल्कि वो वॉलंटियर्स बनेगी जो जाके और लोगों को भी अवेयर कर सके कि उन्हें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। तो इसी के साथ मैं निवेदन करूंगी हमारे मुख्य अतिथि महोदय कि आज वो सेल का उद्घाटन करें हमारे बच्चों को इस नई परिस्थिति को अर्जित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ इस सेल में मैं डॉक्टर प्रगति शुक्ला और डॉक्टर नीलम वर्मा एज कोऑर्डिनेटर ज्वाइन करेंगे।
Women Entrepreneurship Cell, its vision is to create a nurturing space for women by promoting Women Entrepreneurship Cell. Its vision is to create a nurturing space for women. Women Entrepreneurship Cell, its vision is to create a nurturing space for women. Students welfare प्रोफेसर सुबोध कालिया जी को कि वो आपकी टैबलेट वितरण की स्कीम से सभी को अवगत कराते हुए हमारे छात्रों को माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी के कर टैबलेट दिलवाने का शुभ कार्य करें। साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नक्सल सिंह सर एंड डॉक्टर उपेंद्र जी कि वो यहाँ मंच पर सुबोध कालिया प्रस्तुत करें। मंच पे आती एवं इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण समारोह में उपस्थित आईटी लखनऊ के सत्र 2023 के सभी लाभान्वित सबसे युवा एलुमनाई का मैं इस सभागार में स्वागत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद युवा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट को निधि शक्ति योजना के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना में डिवाइस के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग में ना तो कोई आयु की सीमा निर्धारित की गई है न आय सीमा। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या प्रदेश के बाहर के हो, उन्हें डिवाइस वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत युवाओं को टैबलेट में निःशुल्क वितरण तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा उनके शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने तदुपरांत विभिन्न शासकीय गैर शासकीय की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग किया जा रहा है। इस योजना के संदर्भ में भारत की बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी इन्फोसिस इंस्टीट्यूट द्वारा युवा वर्ग को डिजिटल सशक्तिकरण एवं स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से CSRI एक्टिविटी के अंतर्गत स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक एवं अन्य उपयोगी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे छात्र छात्राओं को रोजगार 16,000 कोर्सेज और प्रोग्राम निःशुल्क उपलब्ध है। महोदय 2021-22 में आईटी संस्थान में बीटेक, MBA, MCA, MTech विधाओं में 744 छात्र छात्राओं को डिवाइस का वितरण किया गया था। सत्र 2022-23 में संस्थान के 770 छात्र छात्राओं में से प्रथम चरण में आज 627 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें यूजी पाठ्यक्रम में 430 छात्र छात्राएं, MBA, MCA में 130 छात्र छात्राएं और MTech में 77 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया जाना प्रस्तावित है। 146 छात्र छात्राओं को द्वितीय चरण में 5 दिसंबर 1 से 1 वीक में टैबलेट वितरण किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय एवं अतिथि से अनुरोध है कि सत्र 2022-23 के अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर में पंजीकृत छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण करने की अनुमति प्रदान करें। महोदय आपके समक्ष 2022-23 के कुछ विशिष्ट छात्र छात्राओं को मैं आपके समक्ष टैबलेट वितरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषभ मिश्रा।
Avni Pandey, Shivani Tiwari, धन्यवाद प्रोफेसर सुबोध ग्रेजुएट सर भी स्टूडेंट वेलफेयर। समय की कमी के चलते सभी को मंच पे नहीं किया जा सका, पर सभी को मंच पे ही मिलेगा कार्यक्रम खत्म होने के बाद। आप सभी से अब हम अंतिम श्रृंखला में हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय थोड़ा सा और इंतजार के साथ में आशा करती हूँ कि आज आपने अपने इस लास्ट ईयर में सीनियर को देखा वो कितना अच्छा कर रहे हैं। सीनियर को वाले जूनियर हाथ बना के जाएंगे। आप इस बात में आमंत्रित करना धन्यवाद मैडम।
कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, मैकेनिकल, ऑलमोस्ट सारी जो है ब्रांचेज दूसरे की तो है, लेकिन आईटी जैसे संस्थान को नई टेक्नोलॉजी की ब्रांचेज भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। एआई है, आईओ, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं, और जो नई चीजें प्लस रिसर्च की चीजें भी आईटी में अपने नाम के लिए, जिस तरह आईटी का इतिहास है, जरूर होनी चाहिए। और मैं, जो हम लोगों ने आज डीसी साहब तय किया है कि इन बच्चों को ऑन फील्ड, मतलब हम आपको इंडस्ट्री विजिट भी कराएंगे, ये आज हम लोगों ने तय कर लिया है। ड्यूरिंग द कोर्स आपका जो कोर्स है, सिविल इंजीनियरिंग वालों को कहीं ले जाएंगे, मैकेनिकल वालों को कहीं ले जाएंगे, सब हमारे डीसी साहब व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े दिल वाले हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। और देखिए भारत का प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी G20 का उन्होंने आयोजन कराया, बड़े बड़े महारथी एक साथ लाइन लगाए खड़े थे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत है और आज के भारत की ताकत है। सौभाग्यवश कुछ दिन पहले मुझे जापान और कोरिया जाने का मौका मिला। सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको सुनिएगा थोड़ा। उनके पास एक शक्ति है, टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। मीटिंग 9 बजे है तो 8:55 पे आ जाएंगे, और बहुत डाउन टू अर्थ है। दोनों जगह मैंने देखा, आप पहचान नहीं पाएंगे ये कंपनी का सीईओ है, आपके अगल बगल खड़े रहेंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये $100 मिलियन की कंपनी का सीईओ है। ऐसे डाउन टू अर्थ है। इसलिए जापान आज जापान है, और सोचते कहां है, जहां हम हमारे अंदर भी बहुत क्षमता है। मैं आपको थोड़ा सा बच्चों कहना चाहता हूं, हमारे अंदर भी बहुत क्षमता है, पर डायरेक्शन को सही रखिए। आपको ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग जिनको टैबलेट मिल रहा है वो तो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, पर जो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए स्वर्णिम भविष्य है। संस्थान को बेहतर बनाने के लिए हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रमुख सचिव ने कहा, वीसी साहब, सब लोग संस्थान के साथ मजबूती से खड़े हैं। और संस्थान से भी मैं निवेदन करूंगा, सभी कर्मचारियों से निवेदन ही कर सकता हूं, कृपया पॉलिटिकल चीजों को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। संस्थान के अंदर राजनीति बंद कर दीजिए। आप अध्यापक हैं, पढ़ाइए, वाला काम हमारा है, उसे हमें करने दीजिए। बच्चों को अच्छा वातावरण दीजिए, ये बच्चे जब यहाँ से जाएं उन्हें प्रतीत हो कि ये नया भारत है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पुल भी इसी भारत ने बना दिया, चिनाब नदी पर बनाया। कभी किसी ने सोचा था
ब्रह्मपुत्र नदी ने विश्व का सबसे लंबा पुल भी इसी भारत ने बना दिया, नए भारत ने बनाया। वंदे भारत ट्रेन मैकेनिकल के स्टूडेंट बिना किसी सहायता के मैकेनिकल के स्टूडेंट ध्यान से सुने, उसी रेल कोच फैक्ट्री मद्रास ने वंदे भारत बना दिया। अगर कहीं बाहर से लाते तो लंबा पैसा लगता, अपने से बना दिया और हर जगह उसको चालू भी कर दिया। देखिए डेटा सेंटर, मैं जापान और कोरिया की बात कर रहा था, सारे लोग खुश हैं कि इंडिया में डेटा सेंटर खोला जाए। और मुझे लगता है जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, डेटा सेंटर का हब जो है धीरे धीरे भारत होता जा रहा है। और वो कौन सा है? सेमीकंडक्टर चिप, है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? सेमीकंडक्टर चिप का भी सेंटर कुछ दिनों बाद भारत बनेगा। ये है नया भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश को भी उसी नए भारत में बहुत तेजी से जोड़ने का काम किया है। हमारी गवर्नर महोदया ने जिस प्रकार से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि लेकर के आपके 2 विश्वविद्यालयों को, जिसमें से एक विश्वविद्यालय को नैक का ग्रेडेशन दिलाने में आपके वीसी का आपका बड़ा योगदान रहा। तो हमारी गवर्नर महोदया ने, पहले नैक कौन जानता? नैक का ग्रेडेशन भी हमारे 2 तकनीकी विश्वविद्यालय पीटीयू और एमएमयूटी को दिलाने का काम किया है। मैं वैसी ही एक अपेक्षा के साथ बात समाप्त करने के पहले चाहूंगा ऑफ सारे जितना नाम और उठा, नाम को और ऊपर ले जाने के लिए आप सब लोग मिलजुल करके काम करें। आपके साथ विभाग खड़ा है, आपके साथ विश्वविद्यालय खड़ा है, आपके सामने रास्ता बड़ा है। आगे बढ़िए और अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और देश का नाम रोशन करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः उन बच्चों से माफी मांग रहा हूं जिनको मुझे अपने हाथ से युवाओं के साथ जीवन के जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में नंबर 1 रहिए। यही शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्दों से हम सभी को और आईआईटी में आईआईटी बनने का सामर्थ्य है, हमारे लिए सभी संस्थान के साथ भी निरंतर बना रहे। इसी के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे कुल सचिव महोदय डॉक्टर प्रदीप धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप वाजपेयी। हमारे इसके बाद जो टैबलेट बने हैं उसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर जेपी पांडे जी हमारे साथ रहेंगे। एक बार पुनः हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी अतिथिगणों को, हमारे मुख्य अतिथि को जो अपने व्यस्त समय लेकर हमारे मध्य आए। हमारे देवराज जो हमारे प्रमुख सचिव हैं प्रारंभिक शिक्षा का, उन्होंने भी समय निकाला, वो हमारे मध्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुलपति महोदय जो अभी हमारे साथ बने रहेंगे के बाद भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी से अनुरोध है कि इस बार पुनः हमारे मंच में आएंगे जो हमारे ध्वनि के साथ मुझे विदा करिए। कार्यक्रम अभी हमारा जारी रहेगा।